वेलकम अगेन। आज हम बात करेंगे क्लास प्लस टू के चैप्टर नंबर 4 में से द लास्ट टॉपिक दैट इज सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। क्लास 10th में हमने पढ़ा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यहां पे हम बात कर रहे हैं सिस्टम। इन एक्चुअल क्लास प्लस टू में हमारे पास मैक्सिमम 3 इक्वेशंस की बात हो रही है। मींस देयर विल बी 3 वेरिएबल्स एंड 3 इक्वेशंस। 3 वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने के लिए एटलीस्ट वी रिक्वायर 3 इक्वेशंस। द सेम वे 2 इक्वेशंस के साथ भी हम काम कर सकते हैं, जैसे आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्लास 10th में किया था। वही सिस्टम हम यहां पर यूजिंग मैट्रिक्स मेथड भी कर सकते हैं। सो मैं आपको एक 2x2 यानी जिनके अंदर 2 इक्वेशंस और 2 वेरिएबल्स हो, एक वैसा तरीका से सिखाएंगे, और एक जिसमें 3 इक्वेशंस और 3 वेरिएबल्स हो, उनको कैसे सॉल्व करते हैं वो बताएंगे। अब हम याद करें क्लास 10th में कि हमारे पास जब भी एक सिस्टम दिया जाता था तो हमारे पास 3 किस्म के सॉल्यूशंस होते थे। देयर यूज्ड टू बी 3 केसेस। वन वाज यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड वाज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन एंड थर्ड वाज नो सॉल्यूशन। मींस कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मींस जिसके अंदर यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस निकले वो, और तीसरा इनकंसिस्टेंट जिसके अंदर कोई सॉल्यूशन ना निकले। तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे पास सॉल्यूशंस किस किस्म के हैं? अगर यहां पर हमारे को सिस्टम दे रखा है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, first of all what we have to do, we need to find out the determinant of A। अब ये A क्या चीज है इसके बारे में भी समझिए। मान लीजिए आपके पास a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये 2 इक्वेशंस दे रखी हैं और इनकी वैल्यू निकालनी है। So here A will be the coefficients of x and y, A2, B2, and B will be the constants and x will be the values of this. If there are 3 equations, A1x plus B1y plus C1z is equal to D, A2x plus B2y plus C2z is equal to D2, A3x plus B3y plus C3z is equal to D3. So here A will be the coefficients, means A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, and B will be equal to D1, D2, D3, and X will be X, Y, Z. So here if you see, we can write down these equations as Ax is equal to B. अगर मैं A को X के साथ मल्टीप्लाई करूं, the first row is multiplied with the first column, it will become A1x plus B1y is equal to B is equal to C1. Similarly here. So how we can find out the solution? If inverse of A exists, then I can write it as like this. X will be equal to A inverse B. And we know that अगर inverse exist करने की condition क्या थी? That A should be a non-singular matrix. Non-singular matrix means जिस matrix का determinant 0 ना आए। तो यहां पर भी हम चेक करेंगे, 2 केसेस हैं, या तो डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा या डिटर्मिनेंट 0 होगा। If determinant is not equal to 0, then unique solution and that will be like this. ऐसे आप यूनिक सोल्यूशन x, y और z की एक एक वैल्यू आएगी आपके पास। और मान लीजिए आपके पास डिटर्मिनेंट a 0 आ जाता है, then there will exist 2 cases. One will be no solution and the second will be infinite many solutions. What we will do, we'll find out
adjoint of A and will multiply it with B in both the cases. अब यहां पर भी क्या होगा, या तो इनकी प्रोडक्ट जीरो होगी या नॉट इक्वल टू जीरो। अब ये दो केसेस हैं, अगर प्रोडक्ट जीरो आ जाती है तो अलग बात, और अगर प्रोडक्ट जीरो नहीं आती है तो अलग बात। अब वो है क्या, यानी एक होगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस और एक होगा नो सॉल्यूशन। और अगर जीरो आ जाता है तो इट मींस इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस एंड जीरो नहीं आता है तो नो सॉल्यूशन। आई होप इट इज क्लियर, द फिगर इज क्लियर। आपके माइंड में ये चीज सेटल हो जानी चाहिए। मैं अब आपके साथ एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को सॉल्व करके दिखाता हूं यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। एक 3x3 के साथ बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे कि अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो आ जाए तो कैसे करना है। आई होप टिल नाउ यू पीपल आर वेरी मच क्लियर। सो नाउ लेट्स हैव वन एग्जाम्पल। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि क्या कैसा सॉल्यूशन आता है, यूनिक होता है तो क्या करेंगे, और अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो आ जाए तो क्या करेंगे। सो लेट्स टेक वन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का एग्जांपल लेते हैं। So the equations are 5x minus 7y is equal to 2, 7x minus 5y is equal to 3। ये आपको याद है क्लास 10th में आपने किया हुआ है, देखते ही आपको पता चल गया that a1 by a2 is not equal to b1 by b2, so it will definitely have a unique solution. So the value of a here is 5 minus 7, 7 and minus 5. The value of b here is 2, 3 and the value of x here is x, y. In the next step what we will do, we'll find out the determinant of a. 5 minus 7, 7 and minus 5, and the value is minus 25 plus 49. That is 24 not equal to 0. It implies A is a non-singular matrix. So inverse A exists and solution will be unique and x will be equal to A inverse B. Now we need to, because I know the value of x, I know the value of y, but we need to find out A inverse. We know that A inverse is equal to adjoint of A divided by determinant of A. We know the determinant of A, we just need to find out adjoint of A. For adjoint of A is A11, A12, A21, A22 transpose, where A11, A12, A21 and A22 are cofactors. So let's find out A11, A12, A21 and A22. So first of all, according to their even or odd places, we'll put the signs. 1 plus 1 is 2, that is even, so sign will be positive. 1 plus 2 is 3, odd, so sign will be negative. 2 plus 1 is 3, odd, so sign will be negative. 2 plus 2 is 4, and that is even, and the sign will be and. A11, so it will be minus 5 and the value will be minus 5. A12 is 7, that will be minus 7. A21 is minus 7, that will be 7, and A22 will be 5, and that will be 5. I hope the
cofactors are clear to everyone? So adjoint of A is equal to -5 -7 7 5 transpose is equal to -5 -7 7 and 5, and x is equal to A inverse B, and the value of x is xy. A inverse is adjoint of A divided by determinant of A, 1 by 24 minus 5 7 minus 7 5, and the value of B is 2 and 3. So xy is equal to 1 by 24 as it is. Let's multiply both of them. Minus 5 2s are minus 10 plus 7 3s are 21. Next is minus 14 plus 15. That is equal to 1 by 24, 11 and 1. So the value of x is equal to 11 by 24 and the value of y is 1 by 24, and that is your answer for first question. The value of x is 11 by 24 and value of y is 1 by 24. Let's have another example in which there is no solution or there is infinite many solutions. So by 2 only we can understand that. So एक एग्जांपल लेते हैं. आपको मालूम है कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस के लिए बोथ द इक्वेशंस शुड बी लाइक कैसी होनी चाहिए, जिसके अंदर a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. So let's have 3x plus 2y is equal to 7, 6x is equal to 14. Now you can see a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. So we'll take a as 3 2 6 4, b as 7 and 14, and x as x y. Infinite many solutions. So first of all we'll find out the determinant of A. Now you can see 3 to 4, that is 3 2 6 4, 4 3s are 12 minus 12, that is equal to 0. It means determinant A आ गया 0, inverse A exist नहीं करता है. So what we need to find out? We need to find out adjoint of A, and to find out the adjoint of A we need to find out the cofactors. So A11, A12, A21 and A22. A11 positive, negative, negative and positive. So A11 is 4, A12 is 6, A21 is 2 and A22 is 3, and the value is 4 minus 6 minus 2 and 3. So adjoint A will be equal to 4 minus 6 minus 2 3 transpose, and 4 minus 6 minus 2 and 3. In the next step, what we have to do, we need to find out adjoint A into B. So let's find out that. 4 minus 2 minus 6 3, and the value of B is 7 and 14. So let's multiply. And that come as 0 0, means a complete 0. It means, it implies it has infinite many solutions. So how we'll find out the infinite many solutions? We'll do first equation. First equation, 3x plus 2y is equal to 7. 3x is equal to 7 minus 2y. X is equal to 7 minus 2y by 3. Let y is equal to k. So x will be equal to 7 minus 2k by
3, where k belongs to rectangles. So whatever the values of k will be there, we will be able to find out the values of x and y. So it shows infinite many solutions. I hope it is clear. Let's have one more example of no solution. So what we need to do, we just have to change this. Otherwise everything will be same. 7 and 8, and the value of adjoint of A into B will be equal to and that is equal to not equal to 0. So no solution. It implies no solution. So I hope it is clear with the 2 by 2. Let's have one example of a 3 by 3 matrix, and then we'll discuss the homogeneous linear equations. In homogeneous, there is the value of B is all the values of B is 0. वो है homogeneous linear equations. उसका भी एक आपके साथ solution करेंगे homogeneous से related. So let's have one example. The equations are 2x plus 3y plus 3z is equal to 5, x minus 2y plus z is equal to minus 4, 3x minus y minus 2z is equal to 3. तो इसकी भी वही वैल्यूज हम a, b और c के साथ काम करेंगे. So the matrix A will be 2, 3, 3, 1, minus 2, 1, 3, minus 1, minus 2. The matrix B will be 5, minus 4, 3, and the matrix X will be X, Y, and Z. And first of all, we need to find out the determinant of A. Determinant of A is 2, 3, 3, 1 minus 2, 1, 3 minus 1 minus 2, and the value is 2 into 4 plus 1 minus 3 into minus 2 minus 3 plus 3 into minus 1 plus 6. 2 into 5 minus 3 into minus 5 plus 3 into 5. That is 5 2s are 10 plus 15 plus 15. That is 40, and which is not equal to 0. It implies inverse A. A is a non-singular matrix. So inverse A exists. Solution is unique. And how we'll find out the solution? Solution X will be equal to A inverse into B. And we know that A inverse is equal to adjoint of A divided by determinant of A. We know the value of determinant of A. We just need to find out adjoint of A. And to find out the adjoint of A, we need to find out the cofactors. So let's find out the cofactors. A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, and A33. So first of all, we'll put the sign. Even place for positive, odd place for negative, even place for positive, negative, positive, negative, positive, negative, and positive. And here we'll write down the values so that साइन की मिस्टेक आपकी ना हो. साइन आप पहले लगा सकते हैं. सो A11 will be 4 plus 1, and that will be 5. A12 is minus 2 minus 3, that will also be again 5. A13 is minus 1 plus 6, that will again be 5. A21 minus 6 plus 3 minus 6
plus 3, that will be 3. A22 minus 4 minus 9, that will be minus 13. A23 minus 2 minus 9, that will be 11. A31 3 plus 6, that will be 9. A32 2 minus 3, that will be 1. A33 is minus 4 minus 3, and that will be minus 7. So we know all the cofactors. So adjoint of A will be equal to 5, 5, 5, 3 minus 13, 11, 9, 1 minus 7 transpose. So adjoint of A is equal to 5, 5, 5, 3 minus 13, 11, 9, 1 minus 7. And inverse of A is equal to 1 by 40, 5, 3, 9, 5 minus 13, 1, 5, 11 and minus 7. And the value of X will be equal to A inverse and B. So X is X, Y, Z, and A inverse is 1 by 40, 5, 3, 9, 5 minus 13, 1, 5, 11 minus 7, and the value of B is 5 minus 4 and 3. So let's multiply and get the answer. 5 5s are 25 minus 4 3s are 12 plus 27, 5 5s are 25 plus 52 plus 3, 25 minus 44 minus 21. X, Y and Z. Here also X, Y and Z will be equal to 1 by 40, it will be 40, it will be 80, it will be minus 40, and that will be 1, 2, minus 1. And the value of X is equal to 1, Y is equal to 2, and Z is equal to minus 1. That is your answer. So एक और कंसेप्ट दैट इज होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस, उसका भी एक एग्जांपल लेते हैं. होमोजीनियस इक्वेशंस कैसी है हमारे पास? a1x plus b1y plus c1z is equal to 0. a2x plus b2y plus c2z is equal to 0. a3x plus b3y is equal to c3z is equal to 0. जब आपके पास कांस्टेंट टर्म्स जीरो आ जाए, यानी बी जो मैट्रिक्स है वो कंप्लीट जीरो मैट्रिक्स हो, तो ऐसी इक्वेशंस को हम होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं. और यहां पर आपके पास दो ही किस्म के सॉल्यूशन होंगे, या तो यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन. ट्रिवियल सॉल्यूशन के अंदर यानी सॉरी इट इज प्लस, सो ax इज इक्वल टू बी, मैं x विल बी a इनवर्स b. अब b 0 है तो x will be equal to 0, means x is also 0 is equal to y is equal to z. अगर if determinant of a is not equal to 0, और अगर determinant of a अगर आपके पास 0 आ गया तो आपको क्या करना है? फिर आपको इनको इक्वेशंस को जैसे आप नॉर्मली सॉल्व करते थे, जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल में आपको दिखाया था कि x की वैल्यू कुछ निकालिए, दूसरी इक्वेशन में पुट कीजिए, वहां से आप k लेकर के x, y और z के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे. सो लेट्स हैव वन एग्जांपल रिलेटेड टू होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस. दोनों केसेस आपको बता देते हैं कि किस केस में x, y और z जीरो आएंगे और किस केस के अंदर आपको सॉल्व करना है. सो लेट्स हैव एग्जांपल. होमोजेनियस इक्वेशंस का एक एग्जांपल लेते हैं आपके पास. 2x plus 3y minus 4z is equal to 0. 3x minus y plus 2z is equal to 0. x plus 2y minus z is equal to 0. So here the value of a
is equal to 2, 3 minus 4, 3 minus 1, 2, 1, 2 minus 1. The value of b will be, and the value of x will be, we'll find out determinant of a. 2, 3 minus 4, 3 minus 1, 2, 1, 2 minus 1, and the value is 2 into 1 minus 4 minus 3 into minus 3 minus 2 and minus 4 into plus 1. That is 2 into minus 3 into minus 5 minus 4 into 7 minus 6 plus 15 minus 28. So that is 9 minus 28, that is minus 19, not equal to 0. So trivial solution, x is equal to y is equal to z is equal to 0. Khatam. You need not to find out adjoint or something like that. अगर मान लीजिए आपका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो आपके पास इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है. So let's have one such an example जिसके अंदर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है. तो फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको. एग्जाम्पल लेते हैं इसके अंदर भी. ये आ गया आपके पास x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0, x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 0, 3x plus 6y minus 5z is equal to 0. So let's find out the value of a, b and x. The matrix A will be 1, 1 minus 1, 1 minus 2, 1, 3, 6 minus 5, b is equal to 0, 0, 0 and x is equal to x, y and z. So determinant of A is equal to, मैं directly निकाल रहा हूँ, 1 into 10 minus 6 minus 1 into minus 5 minus 3 minus 1 into 6 plus 6, 1 into 6 minus 8, 6 plus 8 minus 12. गलती हो रही है कुछ, sorry, it is 4. It is 4 and that is equal to 0 is equal to 0. So what we need to do here, we'll do x is equal to z minus y from equation number 1. We'll put the value of x here. It is z minus y minus 2y plus z is equal to 0. That has come 2z minus 3y is equal to 0. 2z is equal to 3y. And z is equal to 3 by 2 y. We'll put again the value of z here. X is equal to 3 by 2 y minus y. X is equal to 2. 3y minus 2y means x is equal to 1 by 2 y. X is 1 by 2 y, z is 3 by 2 y. So आपकी मर्जी है, या तो x को k ले लीजिए, या y को k ले लीजिए, या z को k ले लीजिए. आपकी मर्जी है, that depends totally on you. Let x is equal to 2. So y will be equal to half. X is equal to k. So y will be equal to 2k and z will be equal to, we'll put 3 by 2 into 2k. Z will be equal to 3k. X is equal to k, y is equal to 2k and z is equal to 3k is the solution. So here we complete our chapter, that is determinants, and in the next video we'll start up with the another chapter. Till then, thank you very much.